سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان. وطن سے دور، وطن کی آواز اور آپ کی پہچان. سفیر پاکستان. Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. سماجی، ثقافتی، اسلامی. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Dr. Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. ہر جگہ، ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کیسے مزاج ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہاں، پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے. سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، رابطوں کا نام سفیر پاکستان. ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پرنس کریم آغا خان کی برتھ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، اور ہم بھی سفیر پاکستان اور اسٹاف کی جانب سے پرنس کریم آغا خان کو دل کی گہرائیوں سے بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ 77 سال کے وہ ہو گئے ہیں، اور آج بہت بڑا دن ہوگا پاکستان میں، کیونکہ جناب پرنس کریم آغا خان 7 سال بعد پاکستان آئے ہیں، اور آج وہاں پہ بہت بڑی سیرمنی ہے وہاں کے آغا خان میڈیکل کالج میں، اور وہ ایئرپورٹ سے فلائی کریں گے، ہیلی کاپٹر سے وہاں لینڈ کریں گے، اور سیرمنی اٹینڈ کرنے کے بعد واپس وہ ایئرپورٹ جا کے دوبارہ واپس چلے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں. تو یہ ایک تازہ ترین رپورٹ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری رپورٹ ہیں جو میں آپ کو دوں گا. اور ہاں، آج کس سے ملاقات ہوگی آپ کی؟ ڈیفینیٹلی جناب اعظم خان صاحب. اعظم صاحب کا تعلق شکاگو سے ہے، اور ہی از اے مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا بگیسٹ ہیوج کمپنی کال آل پوائنٹ فوڈ سروس انک، جو کہ اس کا ہیڈ کوارٹر شکاگو میں ہے، اور ان کے آفس مختلف اسٹیٹ کے اندر واقع ہیں. ان کی کمپنی کیا کام کرتی ہے؟ ان کی کمپنی جو ہے، آپ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میک ڈونلڈ، برگر کنگ، چپولٹری، KFC، اور اتنی بڑی فرنچائز چل رہی ہیں، ان کے جو بیک اینڈ پہ جو بھی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کمپنی سپلائی کر سکتی ہے. اسکرو سے لے کے بگ مشین تک، اس میں فریزر ہو، بنانے کی مشین ہو، یا برگر بنانے کی مشین ہو، everything, all the technologies, all the digital equipment, everything built, manufactured by his company. ماشاءاللہ ان کا بہت ہی زبردست تجربہ ہے، اور بہت اچھے انسان ہے. اور میں نے اس فیکٹری کا دورہ کیا، اور ایک امیزنگ فیکٹری ہے، اور اتنی ان کی پروڈکٹ ہے کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. جو کہ آپ جو بھی دیکھتے ہیں نا کچن کمرشلز رننگ اینڈ آپریٹنگ، if it is McDonald's or Denny's or Chipotle or Burger King, that is his company providing everything. In one call, the equipment is there, otherwise they cannot run and operate this franchise. تو آئیے ملاقات کراتے ہیں جناب اعظم خان صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. Kaba Fusion is a specialty pharmacy that focuses on infusion therapy. Our primary focus is IVIG intravenous therapy for patients with neuromuscular disorders such as Alzheimer's, MS, CIDP, and patients with primary immunodeficiencies. We also specialize in acute therapies such as IV antibiotics, TPN nutrition, hydration, pain management, and PICC line placement. We have 3 pharmacies located in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Newark, New Jersey. The company is a pharmacist owned with leadership that has over 20 years of expertise in IVIG within the healthcare industry. We are also paired with our own home healthcare agency consisting of skilled nurses who are trained in the monitoring of IVIG or acute infusion and PICC line placement.
We are a preferred Blue Cross provider and are able to provide service in 25 states with a 24-hour turnover in delivery. Our duty is to provide premium specialty in-home infusion. Our goal is to provide patient-focused, compassionate care. Sur Sangam 2014, for the first time, live in concert, two melodious voices coming together from India and Pakistan, Charanjit and Shaista Alam, on Tuesday, December 24th at 6 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. An entertaining evening of melodious music, dinner, dancing, fun, and more. Come celebrate the start of 2014. For tickets and more details, call 714-561-6770. नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे लॉस एंजल्स से बहुत दूर शिकागो में एक और दूसरी बहुत ही अहम तरीन मुलाकात जनाब आज़म खान साहब से। आइए बातचीत करते हैं। आज़म साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कहाँ आपने तालीम हासिल की और आप अमेरिका कब आए? आई वाज बोर्न इन लाहौर। मेरी फैमिली जो थी वो कनाडा मूव हो गई, तो हम लोग टोरंटो में हैं सिंस 1967। तो after I finished my bachelor's in Toronto, I moved to Chicago in 1982. तो यहाँ मैं since then I've been involved in this food service industry. This is actually a different part of food service industry. Then I did my master's from Chicago, business में ही. और while I was doing my internship in this industry, which is commercial food equipment, and then one thing led to another, and I started getting involved with food service equipment components. So since then, I've been in, the equipment parts of food service, and it's been, mashallah, पिछले about 26, 27 years. And I've managed 4 different companies in this industry. And now I'm in mergers and acquisitions. I've been in mergers and acquisitions for about past 8 years. So where we start off with a small company, we make small company into a big company by acquiring many small companies. Either we sell the company and or we do IPO, which is initial public offering. So what was your first job? My first job in this, मेरी पहली job जो थी, I was actually, I started off as a junior accountant in one of the food service industries. अब वो company जो है वो नहीं रही. That company was purchased by another company about 15 years ago. So from accounting, I went into marketing. From marketing, I went into regional sales, and from sales, I went back into management and administration. And then I became general manager of another company that was also merged, and that's how I learned mergers and acquisitions in our industry. So I have worked for manufacturers, to distributors,
to component manufacturers, to this type of company that manufactures and distributes components to the OEMs and redistributors, to service companies, and through other brands. We have 3 brands right now. We have Franklin Machine Products as our brand. We have All Points as our brand. We have Chipotle and Tundra Specialties as our brand. So we're managing 3 different brands, serving 6 different segments of this commercial food industry. Oh, I see. Okay. So how do you become very technical in this industry? Learning about 13,000 SKUs. I don't know those 13,000 components. I am just the managing director. I have people who are very sophisticated and highly specialized in different product lines. We have specialty managers in gas equipment. We have specialty managers in electric equipment. We have specialty managers in different distribution areas. We have sales people who highly specialize in selling to the chains. So जैसे आपने उनसे सुना HR director say कि we have over 450 employees. So they all have their own specialties and they all do their special things. And you have branches all over nationwide? We have branches in New Jersey, Connecticut, Las Vegas, Colorado, and Florida. And Illinois is our head office. So that's your distribution point? Ji. And you deliver the product direct to the... We deliver product direct to the chains, where like FMP specializes in chain products. We sell to chains such as Burger Kings and McDonald's. We have All Point Services, all the service agencies and equipment manufacturers. Then Tundra Specialties sells to smaller chains and regional chains. Oh, I see. Okay. Do you have any competitor in this industry? We have few competitors. At one time we had a lot of competitors. We have acquired them. Okay. So we have 2 or 3 big competitors in this industry. And what percentage of the equipment is locally made and manufactured? Almost every brand that we carry components of is manufactured in America. These are all American equipment components. Now, when you say locally meaning how many are in Illinois? We have a very big equipment manufacturer called Middleby Marshall, Middleby Group. So they own at least about 12 brands. They're located in Elgin, Illinois, a few miles west of here. And then we also have one big group called Manitowoc. Manitowoc Companies owns about 20 some odd brands. These are equipment manufacturers. They are located in Manitowoc, Wisconsin. I see. Okay, so your specialization mostly in American-made equipment. Correct. This is all American-made equipment. Do you import? We import components. We import components from China. We import components from England. We import components from France, Germany, depending on sophistication of the component itself. And then resell to the... Then we sell to equipment manufacturers, service agencies, chain stores such as McDonald's, Burger King's, Chipotle, Panera Bread. Oh, I see. Okay. Do you take care of the overseas customer? Yes, we do. Overseas, we sell through our agents. We have distributors in England. We have distributors in France, China, Mexico. So we don't sell direct to any chains overseas. As the market expanding, franchise food, fast food in South Asia, are you planning to open any facilities in subcontinent area? Yes, we do. Our distributors supply to the chains wherever they are. For example, our distributor in England would handle
chains such as McDonald's or Burger King's or Wendy's within England. And then we have distributors throughout. Mainly we have distributors in Middle East, Europe, and Mexico. Besides the very technical, very advanced equipment, you also sell the general product like making French fries or microwaves, fry baskets. Fry baskets, and parts. Right. That is sold through our other brand, which is Tundra Specialties. They deal with small regional chains, so they like to buy everything from, say, fry baskets to pots and pans. These are what we call MAPA operations. So how many years you are with the industry? कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए? मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन since 1982. Since 1982. At what age you joined the industry? 27. 27. अच्छा. So what's your goal? Where you want to be? My goal is to retire. My goal was to retire at 50, so I missed it. You missed it. Okay. So you want to go further? I want to go further. It's I actually retired for a few days, and then I was made an offer that I couldn't refuse. So after a few days, I said to my wife, "Let's go home." We were in Europe. So we took the next flight, and I started working for this company, and so I haven't retired since. That was about 5 years ago. So what do you do in the extra time you got? Stay busy with the friends. Okay. Stay busy with each other, and stay busy with the work. आपकी जो बेसिक तालीम कहाँ पाकिस्तान में हुई थी? नहीं, पाकिस्तान में जो थी वो जैसे मेरी उम्र 10 साल की थी जब मेरी फैमिली कनाडा मूव हो गई. सो बेसिक तालीम मेरी कनाडा में हुई. आपके वालिद वगैरह? जी, मेरे वालिद जो थे वो he was a college professor. Okay. So my father died when I was 13 years old. Oh. Okay. So since then I've been just working and educating myself. Oh, so you are a self-made guy? Yeah, definitely, like I think everyone else is in this country. When immigrants sit together, they say, we had to buy this spoon ourselves. So we weren't given any spoon, whether silver or gold. Okay. Right. So tell me your story a little bit. If you got any problem, any type of struggle you did, so that give an example to our audience, नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, कि आपने ज़िंदगी में कोई कितनी परेशानियाँ उठाएं to reach and that. परेशानियाँ तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं ना, वो तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं. हर परेशानी के बाद एक खुशी भी होती है. सो हर सीढ़ी के बाद जो है वो एक कदम आगे बढ़ता है इंसान का. सो ये कि होप आपको नहीं गिव अप करनी चाहिए. यू शुड नेवर गिव अप योर ड्रीम्स. ज़िंदगी में ख्वाब होना, ड्रीम होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और you should not give up your dreams and urge to become successful till you have become successful. और सक्सेस जो होती है, just like किसी ने बहुत पहले कहा होगा कि success is a journey, it's not a destination. So जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं, आपको आगे दूसरी मंजिल नज़र आती जाती है, और बस उस मंजिल तक आपको पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर लगती है, बाद दफ़ा जल्दी पहुँच जाते हैं. So it's a mouse and cat kind of play. You have to catch up to each other. कभी आपका ऐसा मकाम आया आपने फील किया कि यार being a Pakistani I was neglected or I was ignored or I was pushed back? कभी कभी आते हैं ऐसे मौके, मगर I always told myself get over it. Exactly. ये जो ये excuses होती हैं, अब जैसे हम पाकिस्तान में हों तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, हम कौन हैं. यहाँ आप हैं तो आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गोरा हूँ या काला हूँ या ब्राउन हूँ. सो वो तो एक्सक्यूज़ हैं. अमेरिका आई थिंक इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. जो मैंने इधर अमेरिका में जो देखा है, आई बिलीव कि इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी काइंड that happens to be in this industry, in this
country, not anywhere else. I see. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ان دا یونیورسٹیز کالجز دے کمنگ آؤٹ سم پیپل بیکم بی انٹرن somebody getting jobs so وہ اگر چاہیں اور وہ انٹرپرنور بننا چاہیں تو ان کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کس طرح سے وہ مارکیٹ میں سکسیس ہوں لیٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ کریں ہم یہ پروڈکٹ کریں ہم یہ انوینشن کریں اور اس طرح سے ہم بزنس میں آئیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس جرنی سے گزر چکے ہیں. میری ایڈوائس ہر اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتی ہے کہ ایز سون ایز یو گریجویٹ یو شوڈ گیٹ ان ٹو ڈسکوری زون. اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنی اپرچونیٹیز ڈسکور کریں کہ اپرچونیٹیز کیا ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز ٹرائی کریں, دیکھیں کہ آپ کو سکسیس کہاں ملتی ہے اور کہاں مل سکتی ہے. سکسیزفل آدمی تبھی ہوتا ہے جہاں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی چیز کر رہا ہو. اف اٹس ناٹ انٹرسٹنگ ٹو یو یو ول ناٹ سکسیڈ. سو کئی لوگ جو ہیں آپ کو مینوفیکچرنگ میں ان کو سکسیس مل جاتی ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ سیلز ایریا میں چلے جاتے ہیں, کئی لوگ انشورنس ایجنٹس بن جاتے ہیں تو ان کو وہاں سکسیس ملتی ہے. سو اٹ ڈپینڈس واٹ یو لائک ڈوئنگ اور جہاں آپ اپنی اپرچونیٹی ڈھونڈ لیں, اور وہ آپ کو تبھی ملتی ہے جہاں آپ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے. امریکن سسٹم میں کامیابی کے کیا راز ہیں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بزنس لوگ کر رہے ہیں, انڈیا میں کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں کیا ایک خصوصیت سسٹم میں کہ یو ہیو ٹو ریئلی رائز ابو دی آرڈنری؟ آئی تھنک کہ محنت جو ہے وہ ہر جگہ جو کامن فیکٹر ہے ان چیزوں میں ان کنٹریز میں وہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے, آپ محنت کہاں کر رہے ہیں, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز سون انف کہ یہاں میں فیل ہو رہا ہوں, مے بی آئی شوڈ چینج مائی انڈسٹری, یہ پروڈکٹ میرے لیے بہتر نہیں ہے, آئی شوڈ چینج دا پروڈکٹ. جو بھی ہے مطلب کہ یو شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو ریکگنائز یور فیلیئرس اینڈ یو شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو ریکگنائز یور اپرچونیٹیز اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود یور تھریٹس. I see. So you still are always looking for opportunity to get more accounts in the food industry and the franchise industry, the big chains? We're always looking for opportunities. You're always open. Always open, You're always not limited exploring. like McDonald's or Chipotle or Burger King. No, never. You can go further beyond. Oh, absolutely. You can go beyond, and we, like any other business, there are failures we face, and there are opportunities that we explore, and there are successes that we celebrate. You are good at customer service. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارا جو بورڈ ہے جہاں ہم اپنی پوری انفارمیشن ہمیں ملتی ہے مینجمنٹ کو کہ ہمارے کتنے ایجنٹ جو ہیں وہ کتنی کالز اٹینڈ کر رہے ہیں, لانگسٹ ہولڈ ٹائم کیا تھا. سو اگر کبھی لانگسٹ ہولڈ ٹائم جو ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو سپروائزر ول پک اپ دا فون ایٹ اینی لوکیشن. Oh, any location. Oh, I see. That's very good. What's Americans feel about you, like other competitors, other American business fellows, about you being in a Pakistani, being in a brown, come from third world country? How they feel about you? I think at the very top position. I think I am always greeted and welcomed everywhere. I don't think مجھے کبھی آج تک کبھی at least I didn't feel it. میں نے کبھی feel نہیں کیا کہ I am being discriminated against. میری کمپنی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کلرز کے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس 3 دیسی ہیں, باقی ایوری بڈی ایلسز دوسرے مذہب سے, دوسری ریسز سے بلانگ کرتے ہیں. سو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ امریکہ میں کم از کم شاید میری خوش قسمتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پاکستانی امریکن رہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ملک کی نمائندگی کریں اور کیا ان کو پریزنٹ کرنا چاہیے, کیا ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جتنے پاکستانی میں ملتا ہوں جنہیں وہ بہت محب وطن لوگ ہیں. ہماری جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں, آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا, ہم لوگ بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کس طرح اونچا اٹھائیں. جی رائٹ, ہماری یہی ہوتی ہے کہ پاکستان
جو ہے وہ کیسے کیسے پولیٹیشنز کے ہاتھوں میں گھرا ہوا ہے، کبھی فوج آ گئی، کبھی پولیٹیشنز آ گئے، مگر ہماری کوشش ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں پاکستان جو ہے ہمارا پرانا پاکستان واپس مل جائے. ابھی ایک نیا جو میں نے فکرہ سنا لوگوں سے وہ یہ تھا کہ یار چھوڑو نئے پاکستان کو ہم نے کیا کرنا ہے. جب ابھی الیکشنز ہوئے تھے they were talking about just give us our old Pakistan back. تو ابھی ایک شاید آپ نے پڑھا ہو، میں ایک دفعہ I was just surfing انٹرنیٹ، تو اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا پورا پاکستان کی جو وہ ہے لٹریسی ریٹ از لیس دین 30%. پر اس کا جو لاسٹ پیراگراف تھا دیٹ سیٹ کہ ایوریج پاکستانی ان امریکہ ہولڈز بیچلرز ڈگری اور ہائر، اینڈ ایوریج انکم آف پاکستانی ان امریکہ از ہائر دین اینی ایتھنک گروپ، where total income of Pakistanis in America is over $10 billion. I'm sorry, it's $40 billion. $40 billion. ابھی کچھ سال پہلے میں نے پاکستانی انویسٹمنٹ گروپ کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی اسلام آباد میں، تو وہاں میں شاید کچھ 200-250 پاکستانی تھا. تو اس پاکستانی گروپ کی جب ہم نے انکم کیلکولیٹ کی تو رائٹ دیئر ان اسلام آباد میریٹس ہوٹل، وہاں جو گروپ تھا اس گروپ کی کلیکٹیو انویسٹمنٹ پاور جو تھی دیٹ واز $10 billion. یہ پاکستانی امریکہ سے آئے ہوئے تھے، مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے تھے، یورپ سے آئے ہوئے تھے، جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان سب کی ریپرزنٹیشن تھی ادھر. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آئی ڈونٹ نو کہ اس کو پولیٹیشنز مس مینیج کر رہے ہیں یا کچھ دوسرے لوگ مس مینیج کر رہے ہیں یا دوسرے انسٹیٹیوشنز مس مینیج کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج اوورسیز پاکستانیز کو اپرچونٹی مل جائے اور صرف گارنٹی مل جائے ان کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ آج کل نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں ہوئی، تو پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ اسی ملک کے لوگ کر سکتے ہیں، اور اسی ملک کے لوگ اس ملک کو بہت کچھ دے سکتے ہیں جو کہ ادھر باہر بیٹھے ہوئے بے چین ہیں. What do you think the role of the Pakistani American in America? Role of Pakistani in America. How they contributing in American economy and technologies? جیسے if you look at Pakistanis in America, I think that there's a huge contribution to American system by Pakistanis. An average Pakistani in this country is a successful individual. We are not one of those people who just look to the government for handouts. We're very hard-working people. ہم میں کچھ جو ہیں وہ بہت امیر ہیں، کچھ جو ہیں وہ not so well to do ہیں، مگر however you look at it ہم لوگ محنتی ہیں. ہم چاہے ٹیکسیاں چلائیں، چاہے ہم اپنا 7-Eleven اسٹور چلائیں یا ایک بہت بڑا بزنس چلائیں، however you look at it we contribute a lot to the American system and we should be very proud of ourselves. Do you support American politics, mainstream politics? I do support mainstream politics. ہم لوگ بزنس ہیں so we have to support them. Do you support charities? I support charities, yes. What do you do in the آپ کے فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی ہوتا ہے کبھی کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کچھ کر لیا behind the scene, never up front. I don't like to be up front. I like to be behind the scenes rather than front of the scenes. اور کافی ہوتی ہیں، کبھی بوٹنگ پہ چلے گئے، کبھی کوئی مووی دیکھنے چلے گئے. سو انٹرٹینمنٹ آرڈنری چیزیں کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں نہیں ہیں. خاص میسج میرے لیے یہی ہوگا کہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی پاکستانی اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف ایوری پاکستانی ان امیریکا. جب ایسے آپ آرٹیکلس پڑھتے ہیں جہاں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایوریج پاکستانی بہت پڑھا لکھا ہے اور ایوریج پاکستانی دوسرے منورٹیز سے زیادہ سکسیسفل ہے اس کنٹری میں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں آج تک کبھی ایسے پاکستانیوں کے سامنے نہیں آیا جو برے ہوں. مجھے سارے پاکستانی بہت اچھے لگتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر کوئی بہت اپنی طرف سے اچھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے سوسائٹی کو. اینڈ وی شوڈ آل بی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی بیکاز ہم پاکستان کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں. اور ہر پاکستانی جو ہے بڑی خوشی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس ملک میں رہتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में काफ़ी कम्युनिटी रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ स्टेट से और मकामी रिपोर्ट भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लोकल ग्लोबल पसंद आ रहा होगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई रिपोर्ट है तो हमें ज़रूर इत्तला करें ताकि हम अपने वीडियोग्राफर या रिपोर्टर को भेजें और वो भी प्रोग्राम आपका कवर करें और डेफिनेटली आपका स्क्रीन हाजिर है सफ़ीर पाकिस्तान। इसके ज़रिए हम दूर तक आपकी आवाज़ और आपकी एक्टिविटी को पहुँचा सकते हैं। आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। मैं हूं जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में मौजूद हूं और यहां पर नासो काउंटी के एग्जीक्यूटिव एड मेगानो जो हैं वो री इलेक्ट हुए हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी ऑफ नासो काउंटी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क ने गुज़श्ता दिनों एड मेगानो की हालिया इंतखाबात में नासो काउंटी एग्जीक्यूटिव की हैसियत से दोबारा कामयाबी पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। एशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने एड मेगानो की कामयाबी पर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता और हालिया इंतखाबात में एड मेगानो की काउंटी एग्जीक्यूटिव के लिए कामयाबी में पाकिस्तानी अमेरिकन ने कलीदी किरदार अदा किया। एड मेगानो नासो काउंटी में मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहतर इक़दामात करने पर पुरअज़म दिखाई दिए। उन्होंने कहा, And that's what we do each and every day. We try to find a way to help all our people, all the residents of Nassau County. And that's really the winning formula. And I'm blessed that you're allowing me to continue that for another 4 years. So thank you all. God bless you and God bless America. डॉक्टर कमाल ज़फ़र ने कहा कि हम पुरुमीद हैं कि आइंदा डिप्टी काउंटी एग्जीक्यूटिव कोई पाकिस्तानी ही होगा। जो मेरी तवक्कुआत इस वक्त हैं वो ये है कि हमारी प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानियों की वोटर रजिस्ट्रेशन हो और मैं चाहता हूं कि डिप्टी काउंटी एग्जीक्यूटिव कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी से बने इस वक्त। नुमान तैयब ने कहा, I think Ed did a wonderful job in the last 4 years, and one of the main qualifications that I feel that Ed has, especially for the Pakistani community, is he likes the community. एड मेगानो की जो आज विक्ट्री है इससे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये एक कम्युनिटी की जीत है। जाहिद सैयद ने कहा कि एड मेगानो मुस्लिम कम्युनिटी के मुकम्मल हमायती नजर आते हैं। तो ये काउंटी एग्जीक्यूटिव ऐसा है जिस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी से पॉलिटिशियन दूर भाग रहे थे, ये उनके साथ खड़े हुए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और उनको डिलीवर किया। न्यूयॉर्क में कसीर तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन के होते हुए और 1.5 दर्जन से ज़ायद कम्युनिटी के नाम पर बनाई गई तंजीमों की मौजूदगी के बावजूद निचली सतह पर भी किसी पाकिस्तानी का हुकूमती इदारों में नुमाइंदा ना होना लम्हा फ़िक्र ज़रूर है। जहांगीर लोधी, न्यूयॉर्क। बिना पार्क में सादा चिकन की पुरवकार तकरीब में अली भाई, फ़हीम भाई लास वेगस वाले, मजीद शेख और सोहेल एंड कंपनी ने अल्प लोगों की तरह का हलाल ज़बिया पहला चिकन रेस्टोरेंट का आगाज़ कर दिया है। इस पुरवकार तकरीब में कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और इत्मीनान का सांस लिया। अमेरिकन हलाल चिकन का रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। सादा चिकन बिल्कुल अल्प लोगों की तर्ज का फूड है। मालकान का कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक हमारा हकीर तोहफ़ा है। इस मौके पे डॉक्टर खालिद एजाज वाइस कौंसल जनरल ने इसका बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पे पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनको फ्री मेंबरशिप भी अवार्ड की। Sada chicken is all about the family values. So we are all the family. So we decided let's go together, and we went together. The name was kept by Majid Bhai here. He said we're going to name this. Mashallah, Fahim Bhai, Suhail Bhai. We all went together. Inshallah, Allah will put His blessing upon us. Yes, Asada chicken is a Mexican halal food. We and which is halal. It's a halal. It's 100% Zabiya halal food. Asada chicken is a fresh, hot and fresh Mexican restaurant. सबसे पहले तो आज का ये दिन, आज की ये शाम इस इदारे के जो वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे मालिकान हैं और मुहिबान हैं, सबको बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है
इनके कारोबार में हलाल जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है इसमें बरकत दे और इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हम सब इसको सपोर्ट करते हैं और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम जो है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो जिसमें हलाल फूड मिलती हो, और ये करते आपको छोटी सी इब्तदा नज़र आ रही है, लेकिन कभी KFC और मैकडोनल्ड्स भी बिल्कुल छोटा सा एक इदारा बना था। तो हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी, और हलाल फूड के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे मैक्सिकन फूड और मेडिटेरेनियन और थोड़ा सा उसमें अपना टच भी ये शामिल कर रहे हैं, तो ये हमें खुशी की बात है और दामे दरमे सुखने हमें जो है ना इसको सपोर्ट करना है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। इतनी अच्छी लोग यहाँ पे मौजूद है, कम्युनिटी मौजूद है, जिसमें हमारे कोई ऐसा हो फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो हलाल भी हो। To the membership, a lot of people will come to the website which we are working on it, and they will see where they can get halal food, and we will promote all those people who are looking for, direct them to come to this location and give their business to this location, and inshallah this business will succeed and grow. बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है, और हलाल की जो लोग तलाश में रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुजीब भाई नसोइल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, माशाल्लाह दे वेरी प्रोफेशनल। नाज़रीन, ह्यूस्टन में हमेशा पाकिस्तान की पहचान बनकर उभरा है और वहाँ के आबाद लोग पाकिस्तान से बेहद लगाव रखते हैं। इन्हीं में से दो शख्स ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से अपने नेक जज्बात और एहसास का इज़हार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमली तौर पर करते हैं, जिसमें जनाब सज्जाद बरकी और नजम पाकिस्तान टाइम्स के शामिल हैं। सज्जाद बरकी इमरान खान के फ्लाई अदारे शौकत खानम की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। इमरान खान का कामयाब तरीन कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद अब इमरान खान दूसरा बड़ा अस्पताल पेशावर के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए ह्यूस्टन में बरोज़ इत्वार डबल ट्री में एक शानदार तकरीब हुई जिसमें 2,11,000 का चंदा जमा हुआ है। इस मौके पे वहाँ डॉक्टर नौशेरवां और फौजिया भी मौजूद थीं और ये तकरीब निहायत ही कामयाब तरीन रही और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की। The mission of the hospital, we want it to be all the hospitals, everything we do, we want it to be model institutions for Pakistan. Want to be able to treat everybody irrespective of their ability to pay, and that's a crucial part of what we do, but also education and research. Remember, the title of the hospital is Shaukat Khan Memorial Cancer Hospital. Gentlemen, I welcome you for this occasion, and thank you very much for coming here. CANCER, this is a 6-letter word, which is synonymous in many areas with death. But it's a human spirit and the God's blessing which kept humanity to fight against it. My friends, my family, the people of Houston who have taken care of not just me but Pakistanis over and over again. I thank you all for being here with us tonight and your graciousness in showing up on a Sunday evening and being with us tonight. आपने हॉस्पिटल के बारे में वीडियोस देखे, आपको अच्छी तरीके से पता है what शौकत खानम हॉस्पिटल is all about. आपको ये मालूम है कि ये इतना ज़बरदस्त कॉज है जिसको आपने हमेशा सपोर्ट किया। आप जो इसको देते हैं, जो आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, आपकी डोनेशंस हैं, वो हकदारों तक पहुंच जाती हैं। पेशावर में एक नया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने ये अस्पताल 50 कनाल के रकबे पर तामीर किया जा रहा है। इसका पहला मरहला 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें आउट पेशेंट क्लिनिक्स, कीमोथेरेपी की सहूलियात और तीसरे मरहलों में रेडिएशन और सर्जरी की सहूलियात शामिल होगी। To Sajjad bhai, to Dr. Barki, and all of you for making it possible for all of us to contribute to such a great cause. So as has been said, it is a national cause. So Shaukat Khanam Hospital belongs to all Pakistanis because it serves all Pakistanis. नाज़रीन, वक्त हुआ कि मशहूर सेगमेंट सफ़ीर सेहत
कहते हैं सेहत है तो दुनिया है, तन की दुनिया, सेहत एक दौलत है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहिद आज मिशिगन से किस डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं और कौन सी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। मुलाज़ा फरमाइए सफ़ीर सेहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर सेहत में आज दोबारा से बहुत ही मालूमाती सेहत के मुतालिक जो चीज़ बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर असगर आसमी डिट्रॉइट मिशिगन के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर असगर आसमी आज सिगरेट सिजेशन पर बात करेंगे, यानी सिगरेट से छुटकारा ज़िंदगी को बचाना। इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मोहम्मद जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया सफ़ीर सेहत। और स्मोकिंग सिजेशन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ है जिसके बारे में इल्म हासिल करना सबकी जान बचाने के काम आ सकता है। पहले तो स्मोकिंग करती क्या है, सब हार्ट डिजीज़ का रिस्क बेहिसाब बढ़ जाता है, लंग डिजीज़, लंग कैंसर्स, उसके बाद ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, आपके ऑक्सीजन लेवल लो, मतलब बेहिसाब प्रॉब्लम्स। उसके बाद ये तो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो बड़े मेजर मसले हैं। तो इसलिए जो हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं उनको सीरियसली न सिर्फ अपनी सेहत के लिए बल्कि ऑल्सो अपनी फैमिली और बच्चों के लिए कई दफ़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो पैसे आप बचाएँ उससे अपनी बेगम के लिए गिफ्ट खरीद लें जो कि काफ़ी काम आएगा। तो स्मोकिंग सिजेशन कैसे करें, ये इस बारे में बेहिसाब लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखी बातें, दो चीज़ें जो स्मोकिंग सिजेशन से बंदे को रोकती हैं, वो पहला तो ये है कि नंबर 1 इज़ कोल्ड टर्की, जिसे हम कहते हैं कि आपने छोड़ दिए बस ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। नंबर 2 इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि दोनों का अबाउट 20% चांस है छोड़ने का स्मोकिंग सिजेशन। तो अब सिगरेट का पैकेट आज फेंक दें एंड फॉरगेट अबाउट इट, एंड इसके लिए ये विल बी द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो आपने ज़िंदगी में कभी किया होगा। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, मतलब लोग गम चू करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, जो कुछ भी हेल्प करता है एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग यू गेट ऑफ, दैट्स द बेस्ट थिंग। एक और चीज़ हमने ट्राई की वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। तो जैसा कि कभी कभी ऑटोमेटिक बिहेवियर्स होते हैं कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं घर और आपको पता लगा कि एक छोटी सेगमेंट जो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं कैसे आपने वो ड्राइव किया। इसी तरह जिस आप सुबह उठे सो के तो आपका बाथरूम जो है वो 15 स्टेप राइट हैंड साइड पे है और किचन जो है 20 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे, और समवेयर वहाँ पे एक स्मोकिंग का सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ है। तो वो ब्रेन के अंदर हार्ड वाइड कनेक्शन बन जाते हैं और वो आदत के तौर पे आदमी जो है वो सिगरेट स्मोक करता रहता है। तो अगर आप वो पैटर्न तोड़ लें, फॉर एग्जांपल आप कहीं छुट्टी पे चले गए, वेकेशन पे, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वेकेशन पे आप चले गए कहीं तो अब आपका बाथरूम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और किचन कमरे में है ही नहीं होटल के, तो अगर आप सिगरेट्स ना लेके जाएं और थोड़ी सी ट्राई करें तो द बेस्ट चांस टू गेट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज़ दैट। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको मेरे जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट को कभी देखना नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में, विच वुड बी अ गुड थिंग, और बेहिसाब पैसे बचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिगरेट एक्चुअली एक आदत है जो कि छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको एक विल पावर चाहिए, एक रूटीन में जो आप एक अपने आप में यूज़ टू बन जाते हैं कि जी अब इस टाइम मुझे सिगरेट पीनी है और खाने के बाद एक पीनी है और सोने से पहले 2 पीनी है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये कि रूटीन हैबिट है ये रूटीन हैबिट बनती है बिल्कुल, और इसको उन्होंने बनाया है ख़ास तौर पे सिगरेट कंपनीज़ ने। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में बहुत कूल तरीके से इसको पेश किया है कि आप एक स्पोर्ट्समैन है, जैसे पाकिस्तान में विलिस सिगरेट स्पोर्ट्समैन है, सारे के सारे क्रिकेटर सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन अगर वो सिगरेट पिएंगे तो थोड़े अर्से के बाद वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इसका मतलब है कि सिगरेट से बचें तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत रहेगी, और सेहत रहेगी तो इंशाअल्लाह खुशहाली रहेगी। तो इसके साथ इजाज़त। थैंक यू सो मच डॉक्टर असगर आसमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. Sursangam 2014, for the first time live in concert, two melodious voices coming together from India and Pakistan, Charanjit and Shaista Alam, on Tuesday, December 24th at 6 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. An entertaining evening of melodious music, dinner, dancing, fun, and more. Come celebrate the start of 2014. For tickets and more details, call 714-561-6770. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप हमसे राब्ते में रहें, और अगर आपके शहर में कोई इवेंट और तकरीब हुई है या होने वाली है तो हमें ज़रूर इत्तला करें। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में NGOs के सिलसिले में काफ़ी अब टफ़ मेजर्स लिए जा रहे हैं कि वो NGOs जो पाकिस्तान जाती हैं एज़ ए फॉरेनर, अमेरिकन और यूरोपियन, तो उन पर अब कड़ी निगाह रखी जाएगी और उनको वीज़ा देने से पहले उनकी काफ़ी तहकीकात भी होगी। एक नया रेगुलेशन मौजूदा हुकूमत ने जारी किया है, और मैं समझता हूँ ये सही है कि जो भी हमारे मुल्क में आता है और NGOs के काम करना चाहता है तो हमें मालूम होना चाहिए वाकई कि वो पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, या उनके मकासद कुछ और हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़, आपकी पहचान, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज सफ़ीर पाकिस्तान को तकरीबन 10-12 साल तो गुजर चुके हैं जियो के ऊपर। इससे पहले डेफिनेटली PTV और केबल TV पे ये रहा, और 25 साल के करीब इस TV ने कंप्लीट कर ली है, और ये एक रिकॉर्ड है। और यही सफ़ीर पाकिस्तान की सच्चाई और हकीकत और रियलिटी है। सफ़ीर पाकिस्तान के साथ रहिए। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ील खान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।